गुड इवनिंग सर, कैसे हो? या हाँ सर। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। आपकी आपने ट्रिप कैसी थी सर? ट्रिप कैसी ट्रिप थी आपकी? भी बहुत अच्छी थी। Okay। सर आप कहाँ गए थे यूरोप में? आ, मैं तो वैसे जर्मनी, हमारा हेड ऑफिस है, बट अच्छा अच्छा। वहां से मैं घूमने गया था स्विट्जरलैंड। ओके 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 ओके। बट अच्छा था। हाँ। अच्छा है स्विट्जरलैंड, लेकिन मैंने सुना हिमालय इससे अच्छा है। मैंने अच्छा देखा नहीं अच्छा है, अच्छा। जी जी जी। बट देखूंगा जरूर। अ, आप ट्रेड कर रहे हो सर? हाँ सर, अभी कर रहा हूँ सर। ओके। रिजल्ट है कुछ? हाँ सर, रिजल्ट तो है, रिजल्ट है सर। अभी डिसिप्लिन में कर रहा हूँ। और अब तक तो सर वो जो एक चैप्टर पढ़ा उस हिसाब से सर वो 84 डेज का चैलेंज चालू किया सर। ओके। तो अभी जैसे ही 40 पॉइंट या 20 पॉइंट निफ्टी में मिलता है और हम्म 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तो फिर सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। तो बहुत हम्म बेनिफिट है सर उससे। एटलीस्ट ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात हम्म। ये है सर। पहले ये कंट्रोल में नहीं था। एटलीस्ट ये है। ओके, अच्छा है। हाँ। बुक का भी अभी मैंने पब्लिशर के पास तो दे दिया है कॉपी, तो थोड़े दिन में जी जी। लॉन्च हो जाएगा ओके ओके होपफुली। ओके। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग फीडबैक। श्योर सर श्योर, अभी सर बाकी का भी करूंगा मैं सर, धीरे धीरे। आराम से आपके हिसाब जी से। जी सर। हम्म, हम्म। ठीक है, वी विल वेट फॉर अनदर 3 मिनट्स और फिर स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर। विल स्टार्ट इन अनदर 1 मिनट। ट्रिप अच्छा रहा योगेश जी, बहुत अच्छा रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी से करेंगे इंग्लिश या इंग्लिश? विच लैंग्वेज? इंग्लिश, ओके, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश, fine. We'll start with Bank Nifty, sorry, Nifty, and then we will go for Bank Nifty. Today's session is for analysis, Nifty and Bank Nifty analysis, and we may also look into some of the stocks if we have time. I'm going to take hardly 1 hour in total, and we will discuss about this, and then I'll also share some details about upcoming.
84 days challenge, which supposed to happen at the beginning of August, but I got some other plan and I was not available, so we will resume this in some time. Okay, so we'll start with Nifty. Uh, if you look into the Nifty, last time when Nifty declined from the top, it was around 800. This is around 800 points. 802 is the Nifty's range. So once it has declined below this point, it had a capacity to go below by 2400. Okay. I'm going to revise some of the past observations which will help us uh, in planning our trades. So if you look into the chart, since this point, it was 20th June 2022, Nifty did not close below 1600 points. 1604, I'm saying. So if you talk about 1604, looks like this. This is 1600. And it did not close to below this. From this high, no. Then on 20, on this was the 4th June, I guess. 4th June, it did not. This was the first time it declined. And because of this, it got an capacity to drop 3 times. Maximum it can go till this point. Maximum. It was against the trend. When I'm saying it is against the trend, that means RSI is above 51. Since COVID, RSI is above 51. Okay. So that means this was against the super bullish trend or the bullish trend which is there since COVID. So since last 4 years, it is a long-term trend. So what was change in this? What was change in this move? When it declined, it got a capacity. When it declined below this, it got a capacity to reach to this point. So I'll also mark this point, which could be the control, but good evening, sir. Uh, uh, After this, when the price is turned bearish in the bullish trend, it is 4 years bull cycle. In that, when price turned bearish, it has lost the capacity to go beyond 1600. I'll show how. This is 1600. So from this point, price could not cross above 1600 now. After losing this strength, it did not have capacity to come beyond that. Even at this point, it did not closed, but then it closed beyond this. And if this has happened, like so, the maximum capacity was up to this point. So I'll also mark this. So then this says now, just a moment. Vedant, okay. So the price has now challenged. The price is now stuck between these 2 points. And then the moment it is declining below 1600,
it is going to again bounce at this point, then at this point, at that this point, and then it will either continue upside journey or downside journey. Currently, so Nifty's range is 802 points. So currently we are below 802, which is this. And as we are carrying some 1600 points logic, till now we have not yet got the understanding why 1600 is carried. So we may also get some new range out of it. But because of 1600, these are the new boundaries which are formed, and price got stuck between these two boundaries. And the moment it is declined below primary range, it has a capacity to go to 1600 maximum capacity. Okay. So when I say this, if now the price is declining below this, then it is going to confirm the pure sideways turn. It will be pure sideways because distance between these 2 points is approximately three times of 1600, and then we are again declining below. Then it is going to lock the price like this, and it should have the snaky moves going forward. So this is what Nifty is showing. So that also shows when this is lower high, this sideways patch can also decline like this. It is also possible. So that means like this, it can also decline because this is lower high. And when this was high, this was low, this was lower high created against this high. This can also tell us price may get settled near this point. And do this has a scope, let the price decline below 1600, then this scope will get enabled, and this will act as an hurdle for some time. But still, the price says it can also shift. It has also capacity to shift down. I am not fond of Nifty, uh, but whatever observation I got in Bank Nifty, I had applied those same observation to Nifty, and that's the reason we can say, let the price decline below this, then we can think about this. Otherwise, we are below 800, and because of we are below 802, it has a capacity of 2400. Okay, so maximum price can go till this point because we have declined below 800. So this was about Nifty. It looks purely sideways. Nifty's targets, Nifty went beyond its targets. So we are currently well ahead, or the high created in Nifty is beyond the capacity of bigger move or primary move. The ranges for Nifty, when we talk about 800, three times of 800 is 2400, and three times of 2400 is around 7002 or something. 24, 802 into 3 into 3, 7218. So the price should have a capacity to fall till this point. Just a moment.
Sorry. So why 7236? Because we are already declined below 2400, and when the price is declined below 2400, it definitely have a capacity to fall till 7200. Okay, and let me also check if it is clearly visible. 77 24 to choice 4800. This is 24, two times of 2400. This this is 24. Then this is, this could be overlapping 24. So if I'm expecting fall, or if the price is showing fall, it can in Bank Nifty, sorry, Nifty, this could be the maximum length. It shows 1900, 19,000 points. We'll check. So this fall is nothing but I'm saying 48. This so 3 is 4,800. It could look like this. Like this, it should adjust. Okay. So let's talk about Bank Nifty now. Bank Nifty. Again, for Bank Nifty, so from the same date, 20, 20th June 2022, it did not have power to close below 4320. Same story, 4320, 4320, 4320, 43 top, from top. It did not have capacity to close below this, but then it has closed below. And when it closed below this, it should have ran like this, because for the first time after this much bull run for 2 years, it declined below 4320. But then someone again restricted this to 6480, which is the actual primary range for Bank Nifty. And because of this, then what has changed in the price? 4320. This this was 4320. It shifted down bottom side of this, and instead of breaking down, it broke above, and then it got a capacity because we are on the trending side. So if long term, if you're talking about long term trend, it is bullish after
crossing above 51. RSI has crossed above 51, right? Uh, so this says the price still have capacity to reach to this point, but before that there is one hurdle, 58,200. This 58,200 is not yet crossed, and it has spent a long amount of time. Why 58 to 200? Because there is also an mathematics. 2160 is a range for 1 hour. If we multiply by 3 for one day, 6480, which is the same range when Bank Nifty could not declined below 6480, right? This is 4320. Yeah. And then 6480 into 3 is 19,440, which is nothing but 19,440 is this approximately 19,400, where price declined. When price reached to 19,400, it declined, or there was a COVID fall because the limit was exhausted, and every time it is crossing above 19,400. So since inception, now we are primarily talking about price which is approaching to a level 19,400. This was the first time when 19,400 is touched. Okay. And then suppose this is 19,400. It got a capacity to climb till this point, and which comes around 15,200 or 15,800 something. 19,450 into 3 is 58,320. So I'll mark this as an 320. Okay. So we are waiting for price to touch this point, but a lot of things are happening during this journey, and even while climbing on this route, it was supposed to close between 2160, but we can see the price has 58,320. Yes, but the price has crossed below this. Okay, so this has added additional challenge. Once the price has crossed below this, it can have a capacity to reach to 6480, because then the limit to go up will get reduced, which is 2160, like this. And that says, sorry, thanks. Yeah. And that says, so so from this point we are beyond 6480. So either, so this third box looks now impossible. Uh, Reaching 60,000 just because we have crossed below 2100. We will not think about this right now.
We will think about this is weekly move. So we need to think in terms of day first. See, the price is taking some action. Someone is taking some action. Now, the moment it has declined below 2160, it can have free fall. The price could fall like hell, but someone is started controlling this price, and that is what is also observed if we are zooming inside this price action. What we could see is 2160. Right now, price is getting control at this point, and the range is around, if you talk about hourly, controlled between 750 points. And while going down, suppose the price has planned to go down, it could have directly gone down because RSI is also bearish. But there is some fight is ongoing between Delhi and Delhi. The participants which are present on daily and participants which are present on hourly chart, and let them decide, let the price take some action. Either it should close above this or close below this. So if the plan has to go down, this should not have happened, and someone has additionally deployed some money to control this plan, and then maybe they will go down, not immediately. They will again go back, they will try to test this line, and then there will be decline. So this action tells us this was easy when we closed below 2160. It is like whenever we are closed below, forget about this one price or one day action. Even in the past, there was another one day action. These two were important days or some event days, and that's the reason price was out of the scope. But still, it managed to come to the area within short span of time. Like within one day, it has tried to 90% of the price action happened inside 2160. Only this was exceptional and this was exceptional, and the reason was to achieve the target. Now imagine the target for the price is to achieve this, but then if we want to fit this distance in this range, I'm talking about this distance, this is the target, and if I want to shrink or fit everything in this, then I need to come down to achieve this target. So this box will not execute in this way, but this should fit in this format, and for that price has to uh, take some action to reach this point, and to while reaching this, even it has a challenge not to close below 2160. So the moment it is closing below 2160, it is going to change the nature of the price. It is going to change the trend. The trend will be downside. And for that reason, price is taking some time. And then what I can sense, it should break above 750. It should, that means it has to. We will not make any decision until price is outside this box, whichever side it breaks. If downside it breaks, we exactly know it can cover the distance 4320. This much capacity it will gain, but then it will lose the trend. And before touching this target, it should not lose the trend. So someone is trying to push this price so hard that it went below 2160, but then some big players are controlling the price, and then their target is to push this price again upside.
But then you can see this was high, so this could be lower high. So again, we need to push it higher side. That means we need to close about 2160. And if we close about 2160, 4320 looks like this. Still, it is going beyond the range and it is approximately touching 59,200. So we'll wait for this. Uh, this halt has taken good amount of time, so it is different than these 2 points. Here, it could not wait outside 2160. Here, it has to not to fall, or the plan is not to fall immediately. So that's the reason some fight was ongoing, and we will get the result of this fight. As it is 750 points range, it may take 1 or 2 weeks. How many weeks I've already taken? 5, 5th of August, 6th, 7th, almost 9 bars. 13 day, 2 weeks are already gone. So decision may be there in next week. Okay. So for me, this is how price looks like. Now, let me also check in 15 minutes. वेदांश आवाज थोड़ा सा कमी कर. In 15 minutes, this is 292. This is 292. This is 292. And then maybe, so because of these three turns, it went sideways in 750. Now to come out of that, maybe after 750, it will start getting stuck in 1%. Here is 1%. So if you consider this point, this is 1%. And then 292, this is 292. Again, it went beyond 292. So slowly it will get stuck in 292. And then it should become narrow or more narrow, whatever. And then the price will be kicked out. So it will look like a funnel. Let's see this funnel. Likewise, we will start all the price will be showing 292 points ranges, and then one fine day it will show 0.33 point range before breaking this. That is what is expected from the price. Now, was it 0.33% range? It was approximately 0.33% range. And if you're talking about 1%, this was 1%. Then was it a 292 point show? This was 292. Okay. RSI is below 49. So yet upside move has not shown any signs. If you talk about hourly, we are still below. We talk about daily, we are above. Sorry. So that says
The first sign we will see into this. So that means 5 minutes might be already up. 5 minutes is already up. And then 15 minutes will follow. Then 1 hour will follow. 1 hour still has some time. Still needs some more power. And then daily is already above this. So that that is the see, there are two forces working. One is from the higher time frame, which is not allowing price to go down because some targets are still pending, and the one time frame lower than this daily has some challenge in managing 750 points range. Because of some reason they have done this additional efforts and we got stuck in 750 points range, and when 750 went or goes sideways, definitely there is some decision inside that 750 range, and once the price is taking that decision, it is going to make that next move. ट्रेड कैसे करें ऐसी सिचुएशन में? ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम 5 मिनट्स, वी आर प्लानिंग फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, just imagine the pressure. We are in the sideways of 750. That means inside this 750, we are now going to experience 292 points moves which are happening, and then price will not be directional. So many times you will find only 292 points moves and price will go non-directional, because this is the funnel. When it first it travel, it is going to take 100% of the distance. Next time it is going to travel, it is going to take less than 100%. Next time it is going to travel, it is going to take lesser distance, and slowly and gradually this funnel will take lesser and lesser distance. So the first length was 750, then we got stuck in 1%, then we got stuck in 292, now we got stuck in 0.33. So when we are traveling through this funnel, it is very difficult. The moment you got this third dent, price goes weird. And if it goes weird, that means if we are inside 750, the maximum free flow will be 292 points, and once we are experiencing one 292 points move, it will be hardly next 292 point move in that same day. Okay, so if you want to plan any trade, suppose this was the first dent, then second dent, and this was the third dent. सो सम टाइम 292 के बाद ट्रेंडिंग हो जाता है एंड सम टाइम साइडवे हो जाता है. दिस इज दिस फॉर दिस यू नीड टू ऑल्सो ट्रैक RSI in this case only, because we are in sideways of 750 and suppose we are trading in 5 minutes. So 750 is on sideways and we are trading in 5 minutes. Then imagine this day when they have planned about 750 points. So from this point, they allowed price to fall till this point. So this was the first time they are approaching to the boundaries. So they allowed that free flow. And in that free flow, there might not be a reversal of 0.33%. Okay, and that is to plan this control. Once we are planning this control, now we have no target, the price has no target to touch this boundary. It can take any reversal within this journey which can close below 0.33. So every time price is traveling some distance, it can have a capacity to come below 0.33, like this has happened here. The RSI was also below, so this is quite a challenge to take a trade. So this normally in this case, when you're planning for up move and we are in the sideways, the nature of the sideways, or if we talk about the price, see, let me first show you. When we are saying sideways, what changes in the price? Sideways is nothing but price takes more dents. Okay,
When we are talking about trending moves, trending move look like this. When we are talking about sideways, it has to decline till 0.33 or below 0.33, right? So that says if you are planning to take a trade once it is confirmed as an sideways, so three dents we got, and now it turned purely sideways. After that, if you want to take a trade, the logic is very simple. When the price is going to take more dents, you should plan something at the stop loss. What does that means? So when the price is crossing above 0.11, it will have a capacity to run certain points. But if it is taking a U-turn and if it is cutting below 0.11, this is right. We are going to experience this more. And if we are experiencing this, let the price settle somewhere. And from that point, let the price again go above 0.11. So immediately we are not going to take any trade for 292 at this point after crossing above 0.33. No 292 points move. If many 292 points move, you are going to experience these deeper dents. So that says after this 0.33, we may not get immediate 0.33. We may get this 0.33 after deeper dent, and that deeper dent is 0.11 when it is going below 0.11 or something, or it is approaching to 0.33. The moment it is declined towards 0.33, let the price come above 0.11, and then you can get for this next 0.33% patch. Otherwise, it is going to give us more losses, because now the trending moves will not be continuously trending for 292 points. They will trend like this with the tens of approximately 0.33. So it is going to break the trends. Okay. And maybe that is what you can experience over here. Immediately this, when we turn for this 0.11, it may become 0.33, 238 or something beyond 0.33. Then it took this 0.33 dent, which also went deeper, and then it ran for another 0.33. And this is also 0.33, but it can extend. It can extend because we are planning to move up, or the price is planning to move up. So it is on trending side, so it can extend to 0.33. It looks like beyond 0.33, but it is nothing but 0.33. So normally 0.33 will be elongated in the direction of trend, and you are going to get approximate 0.33, which is shorter than 0.33 or equal to 0.33 before continuing the trade. Okay, so this was again 0.33, and then we got next trend, because even RSI got bullish at that point. So if you're not talking about RSI, just cut your trend at 0.30. Try to take trades which are covering only 0.33%. Okay. And then suppose after this point, suppose this is future, this is unknown, and if you want to take a trade, just calculate how far we have came from the previous low. It is approximately 430 points. So it is enough. Already enough trend is gone. That means price will have a capacity to run till 1%, but we are not go running behind 1%, because this has already given 0.33. There is no guarantee that we are immediately going to get next 0.33 on top of this. This may again take a reversal, or it may again go into something else. Then suppose 292 has happened and the price has declined below 292. Now it has purely confirmed. Now there will be
toggles between 1%, and that toggling will be happening with either 0.33 or 292. So this is 0.33 again. So this one patch is 0.33, which it is a bullish patch. This one is bearish patch. This one is again bearish patch. If we are planning to mark 0.11, and if we're planning to take this 0.33, then okay, this is the same day. Yes, same day. And RSI is below. Again, if you can take a help of RSI, which is also not needed. So as I said, if in one fine day, if 292 points move has happened, it will be difficult for price to get that another 292 points. So this 292 is here, and this 0.33 patch is already gone. So there is no possibility that the price is again going to climb till 0.33 upside, because it has now overlapping 0.33 boxes. And if we are planning to overlap this again, there is always no guarantee, because almost 60, 70, 80% of the price has already covered this distance. So at least once you are going to get it, a complete run of 292 points. But once that is done, it will be very difficult for the price to again climb to 292 points. This is 0.33. So it is definitely a painful area, because this is not meant for option buyers. This is pure sideways, and that sideways of 750. That means the option sellers should eat this premium in the gap of 1 or 2 weeks. And that's the reason price action will be restricted, or it is created an overlapping price action. Uh, so even in this case, the entire day we spent, this is entire day, right? In 292. This was only 292. Then the next day is also 292. Some hiccups happened, but they are also part of 0.33. So in this case, only one 292 and 1.33 is going to give you a clean move, and then option buyer should not participate in this. This is option sellers game, and option sellers are going to push price before next trending move. Their plan is to eat the premium, and that's the reason price will be behaving in this manner. This is not happening for the first time. We have observed this for since last many years. And if we are getting stuck in 750, the experience is same. Only the difference for this time is 1% range. So price also take a halt of 1%. And then again 292 story will start. So this is how Bank Nifty is looking like. Okay, any queries, any questions? Hi Bhavesh, for you.
Was I audible? How many of you are actually trading? Okay. With two lines or with some other method? Okay. Good. How is the experience? Would you like to share? As I was not present for 2 or 3 weeks, I guess. How is experience of trading independently? I cannot hear anything. 21 trades, 11 in loss and 10 in profits. Good. And what is the final result? How many points, but still in profit? Okay, good. How many points in profit? So almost 21 trades. So approximately 1 or 2 trades. That means around 3 weeks you're trading with two lines, right? Total points, residue, total net total points, total calculate नहीं किया, no problem. But are you getting closer to price? प्राइस समझ में आ रहा है, उसके वजह से जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें प्रॉफिट और लॉस, आई डोंट, आई एम, इट इज लाइक हम फोकस नहीं कर रहे प्रॉफिट और लॉस पे, बट प्राइस समझ में आ रहा है क्या, प्राइस कैसे रन कर रहा है, या आर यू गेटिंग दैट कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस, और इट इज स्टिल कंफ्यूजन? योगेश जी, कंफ्यूजन ही है या क्लैरिटी आ रहा है धीरे धीरे? समटाइम्स कंफ्यूजन। ओके। और वो कंफ्यूजन आप नोटिस कर पा रहे हो एडवांस में, या होने होने के बाद ही आपको समझ में आ रहा है, या टू लाइन्स इज रिस्ट्रिक्टिंग यू नॉट टू टेक एनी डिसीजन, एंड इफ यू आर टेकिंग डिसीजन यू आर गेटिंग, यू आर लूजिंग द ट्रेड, ऐसा कुछ हो रहा है? मैक्सिमम टाइम क्लियर होता है। ठीक है, गुड टू नो दिस। सी, जब हम 2 या 3 महीने तक सिर्फ इतना ही काम करेंगे, 40 पॉइंट प्लस या माइनस उतना ही मैनेज करना है। ट्रेडिंग इज अबाउट वन सिंपल सिंगल रूल, कंट्रोल योर लॉसेस। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड होता है, एक गड़बड़ कर देता है कि हम लॉसेस के पहले हम प्रॉफिट ज्यादा निकालने के पीछे जब भागते हैं, तो एक डिसिप्लिन पूरा गड़बड़ कर देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब, वी नेवर अंडरस्टैंड प्राइस के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा हमेशा प्रॉफिट को कैच करना, जिसकी वजह से प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। और अगर हमने प्राइस को इग्नोर किया तो जो लेसन हम लर्न करना चाहिए बिफोर स्केलिंग, वो कर नहीं पाते, और उसके पहले स्केलिंग करना शुरू करते हैं। एक ट्रेड का फ्रस्ट्रेशन हम दूसरे ट्रेड पे निकाल देते हैं, ऐसा होता है। और उसको अगर हमें ओवरकम करना है तो पहले हमें ये 40 पॉइंट आना जाना बहुत न्यूट्रल करना पड़ता है। माइंड को इतना न्यूट्रल करना पड़ता है कि आपको हमेशा पता होगा कि 40 पॉइंट जाने ही वाले हैं, और गलती से आपको वो ट्रेड देके जाएगा 40 पॉइंट। इतना हमें न्यूट्रल करना पड़ता है, और जब आप इतना न्यूट्रल करोगे, देन योर माइंड विल स्टार्ट इग्नोरिंग द एक्चुअल प्रॉफिट, एंड तब वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगा। तब आप भूल जाओगे कि मेरे ट्रेड में 40 पॉइंट्स के लिए मैंने ट्रेड लिया है, या
मैंने ट्रेड लेने के पहले ही मुझे पता है कि मैंने 40 पॉइंट्स लूज कर दिया। 40 पॉइंट्स आप, एवरी टाइम व्हेन यू ओपन द ट्रेड, इट इज लॉस्ट 40 पॉइंट्स एंड देन यू आर ट्राइंग टू कवर इट फ्रॉम दी बेट। और वो बेट सही होना, ये आपका, आप कभी भी या कोई भी बंदा इजीली नहीं बता सकता। उसके लिए उसको जो पीसफुल ट्रेड है, वो ट्रेड बाहर आना जरूरी है। और वो आने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू टेक एवरी 40 पॉइंट्स ट्रेड until and unless your mind understands कि ये वाला, दिस वन इज द परफेक्ट ट्रेड फॉर मी। ऐसे होता है। यस, ग्रिड बढ़ेगा ही, क्योंकि सी मैनुअल ट्रेडिंग में एक गड़बड़ होती है जहां पे ग्रिड बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस एवरी 2 और 3 ऑकरेंस है। अब नेक्स्ट ग्रिड की स्टाइल भी अलग होगी। नेक्स्ट ग्रिड कैसा होगा, 40 पॉइंट इतने आपको नॉर्मल हो जाएंगे कि आपको एक दिन लगेगा कि मैं 200 पॉइंट निकालने जाता हूँ। फिर आपने जो 2-3 हफ्ते से कमाया वो एक दिन में भी चला जाएगा। ऐसे भी होगा। सो ओनली थिंग इज, अपने को एक तो रोड पता है अपने को कि अगर हमने 40 पॉइंट भी कवर कर लिए तो भी हम 3 साल में इससे बड़ा कुछ बना सकते हैं। तो हमें 200-300 पॉइंट की जरूरत है ही नहीं। कभी कभार एक आध कोई ट्रेड ले लिया 2-4 महीने में, वो ठीक है। बट पहले 40-40 से, देर आर टू वेज, टू जर्नीज विच यू शुड प्लान। यू शुड थिंक ऑफ कैचिंग 30 lakhs। पहले 30 लाख अपने पॉकेट में आना चाहिए कुछ भी करके। उसके बाद की जर्नी एक्चुअल ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है। उसके पहले जो भी हम करेंगे, हम गरीब गरीब वाले ट्रेडर, या जो मैं बोलूंगा कि उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। उसमें हम हर बार फंसेंगे जब तक 30 lakhs हम क्रॉस नहीं करते। यस, ऑफिस का टाइम भी मैटर करता है। बट जब आप प्राइस को न्यूट्रल कर दोगे या प्राइस को इतनी बार ऑब्जर्व करोगे, तो ऑफिस के टाइम का भी कुछ अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तब एक गेम बचता है, दैट इज अलर्ट्स लगाना। जीरोधा में अलर्ट्स लगाना इजी है। जीरोधा में प्राइस कोई क्रॉस कर दिया तो आपको अलर्ट आ जाता है। उस अलर्ट के हिसाब से इमीडिएटली आप 40 पॉइंट्स का ट्रेड लेके उसका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस दोनों में से एक लगा सकते हो। वैसा कर सकते हो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। पहले आपका माइंड न्यूट्रल होना जरूरी है कि 40 आना, 40 पॉइंट्स आना, 40 पॉइंट जाना, इट शुड लुक वेरी नॉर्मल। उसमें कुछ दर्द ही नहीं होना चाहिए। जब वो स्टेज आप कवर कर लोगे, तो ये जो ऑफिस का टाइम वाला भी पार्ट है ना, वो अलर्ट बेस हो जाएगा। उसमें आपको कंटिन्यूअसली चार्ट भी देखने की जरूरत है, टेक्निकली चार्ट देखने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड बोलता हूँ, यहाँ पे अगर आप कोई चार्ट आपके सामने है, समझो दिस वन फाइन डे, इफ यू ओपन द चार्ट। अब आपने ट्रेड यहाँ पे लिया 0.11, समझो 0.11 बेस आप ट्रेड ले रहे हो, पहले एक कैंडल में 0.11 क्रॉस कर दिया, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू रीच टू 0.33। यहाँ पे 0.11 का क्रॉसिंग है, राइट? ये आप कर लो। ये अगर आप कर देते हो, सी, ये 0.11 है, जिसको, जिसका टारगेट समझो 0.33 कर देता हूं मैं। दिस इज 0.33। अब जैसे ये क्रॉस हो जाएगा, हम्म, इसको ना ऐसे मार्क कर देना। अब आप चार्ट देख रहे हो, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब इधर रेड ग्रीन जो भी कैंडल है, अभी तो माउस ओवर कर रहा हूं तो दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नए होने दो। यहाँ पे सिर्फ ये ब्लैक बॉक्स को देखते रहो। और जैसे प्राइस यहाँ से बाहर आ गया, आपका काम हो गया। ये जो ग्रीन और रेड सिग्नल देता रहेगा वो हार्ट बीट चेंज करता रहेगा, बट ये ब्लैक बॉक्स जो है वो आपको साइन ही नहीं देगा कि प्राइस यहाँ से नीचे निकल रही है या यहाँ से नीचे। यहाँ से निकल नीचे निकल रही है तो 40 पॉइंट आपके गए डेफिनेटली, उसके लिए हमने ट्रेड लिया है। बट अगर यहाँ से निकल ही नहीं रही है और आप सिर्फ ऐसे बैठे हो, तो ये वाला ट्रेड अगर आप करना शुरू कर दिए, तो फिर आपके माइंड को जो पीस मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इट इज ब्लैक बॉक्स फॉर यू, and it is, when it will be coming out from this side, it is going to give you a peace, completely different level of peace।
ऐसे वाली ट्रेड ऑब्जर्व करना, और इस पॉइंट पे आने का एक अलर्ट लगा देना, जिसमें आप वो ऑप्शन बाय करके छोड़ दोगे, और इस वाले पॉइंट पे एक ऑप्शन अलर्ट लगा देना। 0.33, इधर एक 0.33, ये करके ट्राई करना इधर। ये अलर्ट है, कैसे देते हैं ये अलर्ट? इधर किधर गया ये जीरो दा, इसमें इसमें है या नहीं है? प्राइस अलर्ट शायद ऑप्शन में ही है क्या? ओके, इसमें से नहीं है, यहाँ से आता है। क्रिएट अलर्ट, इफ द लास्ट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी इज ग्रेटर देन, क्या था वो? 55,281। क्रिएट, ये अगर आप कर दोगे, जैसे प्राइस हिट हो जाएगा, अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर भी है या ओनली अलर्ट, अलर्ट आ जाएगा, फोन वाइब्रेट हो जाएगा, यू कैन गो एंड चेक। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलूंगा। इससे माइंड को इंफॉर्मेशन जो मिलनी है उतनी मिल गई है। एक ट्रेड लेने के बाद वी आर आइदर वेटिंग फॉर +40 -40, और ये इन्फॉर्मेशन के बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन की जरूरी ही नहीं है। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके हार्ट बीट से ऊपर नीचे करते रहेगा, इसका कुछ मतलब नहीं है। ट्रेड गोली छूट गई है, आइदर टारगेट पे लगेगी या नहीं लगेगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी तो धीरे 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 आपका हार्ट बीट अगेन वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन 40 पॉइंट्स हैंड फोल्ड करके 40 पॉइंट जाते हुए देखना, कुछ दर्द नहीं होगा। गलती ट्रेड, वो गलत ट्रेड नहीं है। अंटिल 40 पॉइंट्स इट इज परफेक्ट ट्रेड, बियॉन्ड 40 पॉइंट्स कोई भी ट्रेड, इफ यू आर लूजिंग बियॉन्ड -10% प्रीमियम, वो ट्रेड गलत है। उसके अलावा सारे ट्रेड सही ट्रेड है। और मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं देगा, वो कंटिन्यूअस प्रॉफिट देने वाला एज किसी के पास नहीं होता है। फिर भी हमारे पास टू लाइंस है विच विल हेल्प यू टू फॉल इन टू द राइट साइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट 100% ऑफ द टाइम्स। इट इज गोइंग टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि प्राइस यहाँ से निकलता है, इतना जाता है, इधर ही रुकता है, इधर रुकने के बाद इतना टर्न लेगा, ये सब टू लाइंस वाला पार्ट है। बट टू लाइंस भी निकाल देंगे, देन स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। ओनली वन रूल, -10% कोई भी, आज भी आपने डिसाइड किया आज से 3 साल में ट्रेड करूंगा, और every trade I am not going to lose. If I am option buyer, I am not going to lose -10%. No one can beat you. बट ये हम करते नहीं है, हमारा माइंड डगमगा जाता है, इसलिए हमने ये रूल्स बनाए हैं। ठीक है, ओके। एनी क्वेरीज, कंफ्यूजन? आर पावर के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था मुझे। आर पावर अभी भी सेफ है, डरो मत। वो 40 या जितना भी गया है, अपने हिसाब से पेटीएम इज डूइंग गुड, आर पावर इज डूइंग गुड। आर पावर उन्होंने फिर से सोचा कि फिर से कुछ पोजीशन बना दे, कुछ तो न्यूज आई थी आर पावर में, इसके लिए वो वहां पे फिर से लेके आए आर पावर को नीचे। बट आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड, द टोन ऑफ दिस स्टॉक इज स्टिल इंटैक्ट। वी आर अबव 51, अबव 51 का डिसीजन बिलो 49 जाने के बाद डिक्लाइन होगा। मतलब अगर कोई भी पोजीशन आर पावर में किसी ने बनाई है, इसके नीचे जाने के बाद ही क्लोज करना, अब जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन लोगों को कोई न्यूज मिली, इसके लिए वो वापस नीचे आए और यहाँ पे फिर से एवरेज कर रहे हैं। अपने को इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये वापस यहाँ से उठेगा। जैसे मैंने बोला था, ये 75 पे डिक्लाइन करेगा। अगर 75 क्रॉस किया तो वी हैव नेक्स्ट 3 बॉक्सेस। बट 75 क्रॉस नहीं किया, जैसे कि 75 वुड बी फर्स्ट हर्डल, हम लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रहे हैं, अदरवाइज 75 पे निकल जाते। टू लाइंस क्या क्लब है क्या?
कुछ भी। हम्म। पावर। ओके, some other logic, but I'm looking for my analysis where I have shown the range for R power A. Just a moment. Ah, this one. This still have a power to climb till 75, and if closed beyond 75, then 230 is not impossible. But it declined at 75. Okay, तो टेंशन मत लीजिए, डिक्लाइन ही किया है 75 पे, जो उसको कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि वो रेंज है उनका 75, और उनको मौका मिल रहा है, कोई न्यूज मिल रहा है, तो वो एवरेज करेंगे बिफोर गोइंग बियॉन्ड। तो ये 75.3 जो था वो ये है। 70.5.3, ऐसे ही कुछ थ्री है यहाँ पे। जो भी है, मतलब समझ में आ रहा है, 70 एग्जैक्ट 70.5, 75.3 पे डिक्लाइन किया है। ठीक है, अब ये क्रॉस करना, जब ये कर लेंगे, अब तो टच करके आ गए, जब ये कर लेंगे देन वी हैव दिस ह्यूज मार्क ओपन। तो 75 के अगेंस्ट 1 रुपी, मतलब इसके अगेंस्ट एवरेज इधर ही आ रहा है अपने को। 39.40 का ही अपना बाय होना चाहिए, हमने किया है बाय, और हम कैरी कर सकते हैं सिंपल। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाय किया है जो हाफ ऑफ दिस है, तो आप अच्छे पोजीशन पे हो। भले आपने इतना प्रॉफिट हो जाने के बाद आप डर रहे हो या कुछ भी आ रहा है, किसी ने आर पावर लिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दूसरा था पेटीएम, हमने बोला था पेटीएम इज ऑल्सो डूइंग गुड। पेटीएम में भी कौन पंप कर रहा है उनको ही पता, बट पेटीएम इज गोइंग फाइन। पेटीएम का हमारा टारगेट अच्छा था। देखो ये भाग ही रहा है। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये डिक्लाइन होगा तो 350 पॉइंट्स तक डिक्लाइन होगा, 350 या क्या था, 350 था ना, 350 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 350 पॉइंट्स। यहाँ पे भी हमने लिखा था, क्योंकि उनकी उतनी ही कैपेसिटी है। बोला इलेक्ट्रिक, पेटीएम किधर है? ओके, दिस इज 200 revised analysis this. I guess there is an error identifying PTM. I think it should be 350. So the target will be revised slightly from 1800 to 1700. So इसके बाद भी ना, कहीं तो पोस्ट किया रहेगा मैंने कि यहाँ से भी पेटीएम उठा लो, ऐसा एक पोस्ट किया था। ठीक है, कहीं पे तो मिल जाएगा। इसके नीचे है क्या? वेयर इज अपॉर्चुनिटी विंडो? इसमें देखता हूँ, बीएससी, जेपी पावर।
रहेगा किधर तो। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स। अरे रे, किधर आ गया ये? हम्म। ये वाला कुछ पैटर्न बन रहा है। 1904 पे अभी तक गया नहीं है। अगर 1904 पे गया नहीं है तो यहाँ से भी घूम सकता है। 3051 के ऊपर जाने के बाद ऊपर वाला डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? तो व्हाट वी विल डू फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स, मोस्टली हर दिन ट्राई करेंगे, या अल्टरनेट डेज, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे ट्रेड होने के बाद वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड्स, व्हाट आर द ट्रेड पॉसिबिलिटीज, व्हाट कुड बी द ट्रेड पॉसिबिलिटीज फॉर द डे। वी विल एनालाइज, एंड जो ट्रेड के एक्सप्लेनेशन है वो हम कवर करेंगे। एंड देन वी विल स्लोली स्टार्ट विथ ब्लैकपल 14 के एडवांस सेशंस, जिसमें 84 डेज चैलेंज पीएनएल इंपॉर्टेंट होगा। पीएनएल जो लोग इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए मैं कुछ सेशंस, या उनके लिए हम 84 डेज चैलेंज पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ रूल सेट बना रहा हूँ, वो जो लोग इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम कवर करेंगे, एंड देन जो लोग इंटरेस्टेड है वो उनको रूल्स फॉलो करने हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 84 डेज। वी विल ट्राई टू कवर दिस, जिसमें वी विल मेजरली फोकस ऑन जनरेटिंग पीएनएल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी के पास कुछ नहीं बोलना है, आज सब चुपचाप है, पता नहीं क्यों नहीं बोलना है, तो वी विल क्लोज दिस सेशन नाउ। ओके, कुछ तो बोलो, चैट तो करो, टाइप तो करो, ठीक है? ओके देन, सी यू टुमारो, मंडे इवनिंग। भावेश, कुछ बोलना है? सब चुपचाप बैठ। एम आई ऑडिबल? ओके देन, बाय, क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप लोगों को। बाय पायरेट्स, सी यू टुमारो।